जी अस्सलाम वालेकुम राशिद, बाजिब जब्बार क्रिकेट पीके से। राशिद, इतना मौका नहीं मिला बीएसएल में खेलने का, बड़े कम मैचेस आपने लास्ट टाइम खेले थे, बट नाउ यू आर हियर वंस अगेन। टीम के साथ किस तरह बॉन्डिंग हो रही है? किसी के साथ दोस्ती ज्यादा बिल्ड हुई है? अभी बॉन्डिंग अच्छी रही है टीममेट्स के साथ? कैसा चल रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? एग्जैक्टली टाइम तो ज्यादा नहीं गुजारा, लेकिन फिर भी जितना भी गुजारा, जो 2 हफ्ते थे लास्ट टाइम मैंने गुजारे थे टीम के साथ, ऐसा लगा जिस तरह मैंने 2 साल गुजारे हर किसी के साथ। ट्रिप बन गई पूरी टीम के साथ के। इवन पहले भी थी, फखर जमान के साथ दोस्ती थी, शाहीन शाह के साथ दोस्ती थी, तो अभी जो बाकी प्लेयर्स थे उनके साथ भी दोस्ती बन गई। और ऐसा फील होगा कि आई एम प्लेइंग फॉर दिस टीम फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर। सो काफी अच्छा टाइम था वहाँ पे जो गुजारा। और अभी आप एक और मौका है कि के साथ मजीद टाइम गुजारे और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करे और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। सोहेल इमरान भाई। रश्मि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और यहाँ पर यही था, जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ तो आप अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब अबू धाबी में चली जाती है लीग तो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने आपसे बात की। किस चीज ने, आपका भी वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट था, कि आप दोबारा हिस्सा बने? क्या ऐसी चीज आपने लाहौर कलंदर में देखी है, उनकी मैनेजमेंट के साथ दोबारा आपने जुड़ने का फैसला किया? जी बिल्कुल, जो लास्ट टाइम मैंने जितना टाइम गुजारा था टीम के साथ, काफी इंजॉय किया था, काफी रिस्पेक्ट मुझे मिला था। और एज अ टीम हम यही कोशिश थी कि हम आगे जाए और लाहौर कलंदर के लिए इस साल ट्रॉफी जीते। और अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 ही मैच लास्ट टाइम खेले थे, फिर वापस नेशनल ड्यूटी के लिए आया था। तो इस टाइम मेरे साथ एक ऑप्शन था कि मैं उसको as I said before in the interviews as well, कि ससेक्स ने काफी काफी अप्रिशिएट हेल्प किया मुझे इस चीज में कि यार they gave me that permission to go decide what I want। and मुझे यही था कि यहाँ पे पूरा पूरा टूर्नामेंट only miss like 5 games in county cricket। so वहाँ पे वैसे भी 14-15 गेम है, तो अगर मैं 5 मैच मिस करूँ और यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट खेलूँ तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और फैंस के लिए, सारे फैंस चाहते हैं कि मैं पीएसएल आके पीएसएल खेलूँ, तो यही था डिसाइड कि मैं यहाँ पे आऊँ और पीएसएल खेलूँ। जी एक्सप्रेस न्यूज मीडिया। सॉरी यूसुफ भाई, देखते हैं कि यूसुफ साहब अपना प्लीज ये माइक म्यूट कर लें, और जिसका भी माइक म्यूट है खुला हुआ है प्लीज म्यूट कर लें। थैंक यू। जिससे जो सवाल करे से वो बोले। थैंक यू। राशिद भाई, कैसे देखते हैं कोविड एसओपीज के साथ आपको ये ट्रैकिंग डिवाइस भी दिया गया है, तो क्या समझते हैं इससे कोई इजाफी प्रेशर आप लोगों पर है क्या? सॉरी समझ नहीं है, आवाज कट हो रही। राशिद भाई, कैसे देखते हैं कि कोविड एसओपीज के साथ साथ आपको ये एक ट्रैकिंग डिवाइस भी दी गई है, तो समझते हैं कि इससे कोई इजाफी प्रेशर खिलाड़ियों पर पड़ा है? मेरे हिसाब से इससे तो कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा। हमें जो है ना लास्ट 1-1.5 साल से यही रूटीन के साथ जा रहे हैं कि हमने बबल में रहना है और अपना जो रूल्स हमें दिए हैं उसको फॉलो करने हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से वो कोई किसी के माइंड में नहीं आएगा। हम यहाँ पे आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए और हम वही करेंगे जो सबसे ज्यादा सेफ होगा और टीम के लिए सेफ होगा। तो मेरे हिसाब से किसी के माइंड में वो चीज नहीं होगी कि we have this track and we can be like something else in the mind। so I think कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह नहीं है। हम क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, हम यूज्ड टू हो गए इस माहौल के साथ कि बबल में रहना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो सोशल डिस्टेंस सब चीज के साथ यूज्ड हो गए। तो अभी मेरे हिसाब से हमारे लिए नॉर्मल रूटीन हो गई और कोई बड़ी बात, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। जी कादिर ख्वाजा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, वेलकम बैक अगेन। और मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग आपने दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स खेली हैं, हर तरह के कंट्री में आपने रिप्रेजेंट किया है लीग्स में, तो कैसा फील होता है कि जब आप अफगानिस्तान में थे, उसके बाद लाहौर में आके प्रैक्टिस करते थे, तो अभी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के आप लाहौर कलंदर्स जो है उनको
रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितना हम देख रहे हैं लाहौर कलंदर की अचीवमेंट्स को कि जो पिछले 4 टूर्नामेंट में उन्होंने काफी बुरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब जो है उन्होंने कमबैक किया और पिछले सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया। इस मरतबा जो बकिया मैचेस है लाहौर के, उसमें आप उसको कैसे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं लाहौर की, और कहाँ पर उसको रेट कर रहे हैं? फाइनल तक आप देख रहे हैं उसको कि जाएगी वो? जी बिल्कुल। पहले तो काफी इंजॉय किया जब मैं वहाँ पे गया था, कराची में प्रैक्टिस की, वहाँ पे 2 मैचेस खेले। अनफॉर्चुनेटली वो पूरी क्राउड को परमिशन भी नहीं थी। जब पूरी क्राउड होती है तो फिर आप काफी इंजॉय करते हो। जिस लास्ट टाइम मैंने मैचेस देखे थे जब स्टेडियम भरा हुआ होता था, मेरा तो यही ख्वाहिश था कि हम लाहौर में खेले, क्योंकि वहाँ पे अपनी क्राउड होगी जो सपोर्ट होगी, तो दैट इज समथिंग डिफरेंस, आपको काफी एनर्जी मिलती है जब पूरी क्राउड आपको सपोर्ट कर रही होती है। तो डेफिनेटली इनिशियली जो सीजन थे ये लाहौर के लिए, लेकिन जिस तरह लास्ट सीजन और ये फाइनल तक पहुंचे थे, फिर उसके बाद जो हमने सीजन स्टार्ट किया अच्छा मैचेस के थे, तो ओवरऑल काफी अच्छा है टीम का। द बेस्ट थिंग इज लाइक कॉम्बिनेशन है ना, बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, और जो एक्सपीरियंस है हमारे होती है आपको टीम, तो वो है। तो कोशिश करेंगे कि एक तो हम ले लें, अच्छी परफॉर्मेंस दे, और जो बेसिक्स है उसको सही करे। बाकी वो माइंड में ना रखी कि हमने फाइनल के लिए जाना है और फाइनल जीतना है। अगर हम वो माइंड में रखे तो शायद एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा लड़कों पे, और फिर वही परफॉर्मेंस होगी। तो कोशिश करेंगे कि एक दिन एक मैच को ले ले और अपनी पूरी 100% दे और मैच जीते। जी उस्मान खान, हम न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद। सबसे पहले तो वेलकम टू पीएसएल। और मेरा सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को। अब जैसे कि पीएसएल का जो अब ये बकिया मैचेस हो रहे हैं, इसके अंदर भी काफी अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं इन एक्शन नजर आ रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे, और यहाँ पर आकर आपको एक्सपीरियंस वाइज कितनी क्रिकेट जो है वो सीखने का मौका मिल रहा है इस माहौल के अंदर? जी बिल्कुल। अभी जो प्लेयर्स जितने भी अफगानिस्तान से आए हैं यहाँ पे पीएसएल खेल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके खेले, बड़े प्लेयर्स के साथ खेले और अपना जो क्रिकेट है उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि लीग्स में आपको डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मिलोगे, डिफरेंट कोचेस के साथ मिलोगे, और प्रताप भाई ये चाहिए जे 2 प्रेस का राइट राइट लगी राइट। हाँ 2 सर माइक यूसुफ भाई म्यूट कर माइक ले म्यूट मोहम्मद कर लें। यूसुफ साहब। तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस होता है उन फॉरेन प्लेयर्स के साथ मिलके, कोचेस के साथ मिलके, तो डेफिनेटली आपका क्रिकेट काफी इम्प्रूव होता है। तो हमारे लिए, हम सब के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे भी जो यंगस्टर है जिनको मौका नहीं मिला है बाकी लीग्स में खेलने का, तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आए, यहाँ पे खेले और अपने आप को इम्प्रूव प्रूव करे कि आई हैव द स्किल्स इन टैलेंट कि मैं खेल सकता हूँ। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सारे प्लेयर्स के लिए जितने भी अफगानिस्तान से आए हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं। तो I think they should take the advantage of this league and to prove their self in talent and to show what they can. जी आमिर हुसैन भाई। Assalamu alaikum, Rashid. Rashid, obviously it's a great thing that you're playing for Lahore Qalandars, but the fact is that you played in many leagues around the world, and I just wanted to get an idea from you of how you feel that the PSL compares with the other leagues that you've played with, without taking any names if you don't want to do that. To be honest, I enjoy two games. You understand the league and everything. When you play, the more you play, the more you understand and you get the experience from it. And that I have played all the other leagues like for 5 years, 4 years, and I got the experience of that. So I think I enjoyed a lot. The first 2 games I played in Karachi, and I'm looking forward to this 6 games in to see how it goes. But I absolutely loved those 2 games and I enjoyed a lot. And for me, like
I have to rate it in top 3, the PSL, and I'm looking forward to play the rest of the games, and then you understand, so देखते हैं, काफी एंजॉय किया पहले 2 मैचेस को, कोशिश होगी कि अगले जो मैचेस ये अनफॉर्चुनेटली दुबई में हो रहा है, अगर पाकिस्तान में होते तो फिर आपको और भी एक्सपीरियंस होता था कि जब क्राउड आता है तो आपको सपोर्ट मिलती है, और तो डेफिनेटली जो जो मैचेस होते हैं क्राउड भी अच्छे लगते हैं, और क्राउड पे जब क्राउड होता है तो एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है। तो जितना भी ज्यादा खेलेंगे आपको एक्सपीरियंस होता है, और फिर पता चलता है कि किस स्टेज पे है। जी गौतम भाई। या रशीद भाई, गौतम गल्फ न्यूज से। देखिए, आपको माना जाता है कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में एंड फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपने यू आर द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव लेग स्पिनर। तो हर टाइम जब आते हैं आप, वो 4 ओवर डालने के लिए आपके ऊपर क्या प्रेशर रहता है कि 2 विकेट लेना पड़ेगा, 16 रन देंगे, 20 रन देंगे। सो हाउ डू यू कोप विद दिस? To be honest, I never think about, I have to take 2 wickets and I have to bowl economically well. I always thinking about to bowling best deliveries. If I'm bowling in a right length, in right area, and I'm bowling good deliveries, that's what matters to me. And I never focused on to be more economical or to be taking so many wickets for the teams, 2 wickets, 3 wickets. I never think about that. Whenever I think about that, it puts an extra pressure on me, and that might affect my bowling. So I always have that belief in myself that as long I'm pitching it in the right area, right length, I will get the right trip. So मैं अपने लिए सिंपल ही रखा है कि सिर्फ यहाँ पे बॉलिंग डालनी है, जो भी हो जाए, रन्स पड़े ना पड़े, अच्छे हो बुरे हो, विकेट आए, that is just different. Forget about the result. I don't think about the result. Just think about the process more than the result. मैं जिस तरीके जहाँ पे मैं कहाँ पे बॉलिंग करता हूँ, so that matters a lot, and इसीलिए मैंने खुद के लिए simple ही रखा है. I know the expectation is a lot from every franchise that I have to be taking more wickets and economic well, but I never think about those things. I always have that self belief in I believe on the process. If I go with the process which I have worked on it, I think the job is for me. So keep it simple and just bowl where I can. And I know my area and line and length. As long I'm bowling there, I think I'm getting the right result. जी आशिर भाई। Hi Rashid, this is Ashir Wahidi from Cricket Holic PK. I just have a quick question. As you played first 2 games in Karachi, now you are playing in Abu Dhabi. So how much of a difference do you see it for yourself? I think I didn't get your question because of the... So I just want to ask how much of a difference do you think there is because of the pitch condition of Abu Dhabi and Karachi? Because you bowled in the first 2 games for Lahore Qalandars in Karachi. Now you are going into the face of Abu Dhabi. So how much of a difference do you see it for yourself as a bowler? To be honest, I never think about the pitch a lot. Either I play in Abu Dhabi, I play in Pakistan, I play in Australia, wherever. It's all about how you approach, how you go in the game. That's something which matters to me a lot. I always think about to do well. Forget about the condition. Shouldn't be dependent on the condition. If conditions is good for me, I will perform. If not, I cannot. I think it's all about the process you come with, and I have that belief. As long I'm bowling my best deliveries, I'm bowling in the right area, any condition, any pitch which makes it difficult for any batsman. So मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई difference नहीं होगी condition में. Looks to me the same condition like in Karachi as well, here, and it won't be too much difference. As in Asia, wherever you go, you will find the conditions similar. You will hardly find it different than like in Europe and Australia. You will find it different than here. But I think mostly UAE condition is similar to all countries like Pakistan, Afghanistan, and India. So it's quite similar to that. And but again, it comes how you go in, how you bowl.
most important thing. Sabah Pasha. No question. मुजम्मिल आसिफ. थैंक यू उस्मान भाई। राशिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने सुना ही होगा पीएसएल का पार्ट रहे हैं आपके कराची और लाहौर की, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की जो एक राइवलरी है, हेल्दी राइवलरी, वो बड़ी जो है वो देखी जाती है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो आप पर्सनली कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर पिछले साल फाइनल हारा था, फिर इस सीजन में लाहौर ने एक मैच हराया, तो अब कराची किंग्स के लिए ड्यू है, तो कितना मजा आएगा वो पर्टिकुलर मैच खेलने में? ऑनेस्ट थोड़ा बात टाइम के साथ क्योंकि मैं जी पता नहीं, तो मैंने यही पूछा था कि भैया आप थोड़ा ज्यादा उस, तो as a I will try to go in well, you know, it's always good to have the kind of oppositions in which makes the game more interesting. So मैं as a player करूँगा कि अच्छा खेलो टीम with the same mind जो कोई करने की कोशिश करूँ. Some when you try to do something different, something extra, it affects performance. So कोशिश होगी कि simple और अपना game enjoy करो. I think from the fans' point of view, it might be a different game, but for us, it's like, you know, just a normal game, and we just need to go with the same process we're doing against other. Enjoy the game. This game is all about the enjoyment. You know, I think the more you enjoy, the better you perform, the better the outcome. So that's what I focus. Okay, जी last question. इजाज़त वसीम. राशिद भाई, दो ब्रदर्स मुल्क हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और एक दूसरे को गेम में हेल्प भी करते रहते हैं. मेरा सवाल ये है कि आप अगर ये दोनों ममालिक आपस में खेलें, लीड्स में भी खेले, अबू धाबी में भी एशिया कप में खेले, तो दोनों मुल्कों के नौजवानों को कितना फायदा होगा, क्रिकेट मजीद कितना पॉपुलर होगी अगर दोनों आपस में खेलें? आपकी क्या ख्वाहिश है? बिल्कुल, जब मैंने पहले भी यही बात की थी कि जितना भी ज्यादा खेल में, जितना भी हम ज्यादा क्रिकेट खेले, उससे मुल्कों की ताल्लुक जो होते हैं बहुत बढ़ जाते, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैंस होते हैं ना, उनके बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है. तो स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट लाइक, यू नो, ब्रिंगिंग peace to the country, unity, and that's what, you know, we always like to play more games, and especially youngster के लिए भी, like हमारे लिए भी बेस्ट लेके हम ज्यादा पाकिस्तान के साथ खेले, हमारे यंगस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगेंस्ट टीम एंड बड़े फॉर्मेट के लिए ओडीआई टेस्ट मैचेस. सो उससे क्या होता है, हमारे एक तो ताल्लुकात अच्छे होंगे, और बाकी जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए होती है एज अ यंग टीम गोइंग अप, जो हमारे लिए काफी हेल्प करेगी. तो हम जितना भी इस कंडीशन में ज्यादा बड़ी टीमों के साथ खेले और एक्सपीरियंस ले ले, तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी. और कोशिश है और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीरीज हो जाए, और चला उम्मीद हो जाए. ओके जी, ओके इमाद भाई. Thank you Usman, thank you Rashid, thank you Usman, thank you very much for joining. Thank you Rashid bhai. I'm asking for permission. That says, please ask us to give you permission to record. Yeah. Imad is sorting out. Oh, there's a lot of people on here. I can see now. Yeah. Usman, I'll send it over to you. I'll send you the entire recording. So that's a non-worry. Okay, I'll send it to you through what's his name, Zukhruf. Thank you, buddy. Let's get hard. Yeah, it's fine. We'll do it next time. No worries. हम स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि इमाद ने पहले बताया कि सिर्फ जस्ट अपना माइक ऑफ रखिएगा जब आप क्वेश्चन कर लें. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. हम स्टार्ट करेंगे मोई शाह साहब से. मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज क्वेश्चन. Assalamualaikum. Welcome to the PSL family, Usman Khwaja.
My Thank question to you is that do you think this performance in the PSL would any way help you to get into the Australian side, or at least to get a contract with Cricket Australia? And my second question is whether you have any, you can recall something about your childhood stay in Islamabad? Thank you. Look, it's only 6 games, possibly 7 or 8 games, depending on the finals, but everything helps. You score runs for your team, and you do well, and you win cricket games. They all add up and help. But I think it's too far to look at other stuff, to look at Australian stuff. As I said, it helps, but obviously what I do back home in Australia and domestic competition, that probably has a bit more weight on it than being out here. So, I mean, I love playing cricket. I'm here because I like playing cricket. I love playing cricket. So I'm looking forward to playing in the PSL, something I've never done. And your second question, do I remember anything about Islamabad, did you say? Yeah, I do remember. I moved when I was 4, so I still remember the house. I still remember playing with my brothers. I remember it quite well. We've actually visited twice after we moved to Australia. So I do have memories of Islamabad. जी, thank you. Sohail भाई, Sohail Imran. Usman, you born in Islamabad and made your career in Australia. Did you ever think one day you will come back and represent your native city? No, there's no T20 cricket on when I was younger, so no, not at all. Honestly, I was more just looking forward to playing again in Pakistan. It's unfortunate that we can't play there at the moment. I haven't obviously never played there in my life, so I was really looking forward to going back to Pakistan, playing among the fans. It's still nice to be playing in the PSL, but obviously I would still like to do that in the future. But I think, you know, I never thought I'd be playing. Obviously, growing up, I'd wanted to play for Australia, and then moving forward, I never thought I'd be playing for a Pakistani team because there was no T20 competition, especially the PSL, other than 6 years ago. So, yeah, it only became obviously an opportunity maybe in the last 6 years, but even then it was during our domestic competition, so I couldn't play. So it's just worked out well that I can this time. Thank you. Ijaz Wasim Bakri. उस्मान, आपने दुबई में जो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच बचाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। पीएसएल तकरीबन 4 सीजन यूएई में हुए हैं, आप दोबारा पीएसएल वहां गए। एक तो पीएसएल के जो फास्ट बॉलिंग कंपटीशन के बारे में आपने क्या सुन रखा है, और दूसरा आपका कैसा एक्सपीरियंस है इन अरब के डेजर्ट पे खेलने का, स्पेशली फास्ट बॉलिंग अटैक्स को और स्पिनर्स को? I mean, सब PSL को कहते हैं बॉलिंग अटैक्स बहुत अच्छी होती हैं। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास हर वक्त होते हैं, स्पिनर भी अच्छे होते हैं। आई थिंक जब खेलते हैं दुबई में, वरना अबू धाबी, शारजाह, मैंने पाकिस्तान में नहीं खेला तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, बल्कि आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में और यहाँ दुबई में सिमिलर विकेट्स होती हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली बाउंस बॉल होता है, क्वाइट इवन भी बाउंस होता है। यहाँ विकेट्स थोड़ी सी लोअर रखती हैं और स्किड होती हैं, कभी बार स्पिन भी होती है। आई थिंक इस टूर्नामेंट, क्योंकि सारे गेम्स एक जगह में, आई थिंक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में काफी स्पिन होएगी बॉल की, विकेट स्टार्ट हो जाएंगी। बल्कि आई थिंक you know it's hard to compare. I can't compare to Pakistan, but I've played in the subcontinent enough now. I've played in India, I've played in Sri Lanka, I played here in UAE, so the conditions won't be too foreign. It's just the bowlers, some of the bowlers I might not have faced before, but it's still bat versus ball. Cricket doesn't really change. Gee, thank you. Amir
Oh, hi, Usman. Usman, obviously it's great to have overseas players in PSL playing in our tournament. But as a player yourself, from your point of view, what is the attraction of playing in a league like the PSL for you? Well, as I mentioned earlier, one of the main attractions obviously was playing Pakistan. I hadn't done that before, but I think just playing high level competition. We get to play the BBL in Australia. I've been around. I played IPL. I played in the Vitality Blast in England. Opportunities to play in CPL, but hasn't worked out because of schedule. But the opportunities to play against world-class players, quality players in T20 cricket around the world, which you don't get the opportunity to do unless you're playing international cricket. So that's the beauty of it, I think. A bit like the English Premier League and soccer, soccer leagues around the world, you get to play against world-class players from other countries rather than having to represent your country. I think that's probably the best part because there's lots of good players out there who, at any one time, 30 players from each country could represent their country. But the fact is that they can't, only 11 can. It doesn't mean those other 20 aren't good enough. It's just sometimes there's no spots, sometimes there's no opportunity at the time. So I think this just opens it up a little bit and just showcases how much skill and talent there is around the world, even when you're not playing international cricket. Thank you. Ehsan. उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yep. अच्छा उस्मान, एक खिलाड़ी जो मुसलसल आप खेलते भी हैं, बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, लेकिन जहां आपका मैदान के अंदर मुकाबला होता है वहीं आपका करंटीना के साथ और कोविड के साथ भी मुकाबला है, बार बार आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है, तो उससे मेंटली कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा खिलाड़ियों की सेहत के ऊपर मेंटली, या थोड़ा सा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे खिलाड़ी, या फिर अभी जेल हो गए इस तरीके का पिछले 1 साल से 2 साल से माहौल बन रहा है खिलाड़ियों के लिए? So I didn't get that question. आपका question क्या है? Usman, he's saying it's very difficult nowadays as a COVID situation is not good और players जो हैं वो quarantine करते हैं, तो इस situation से कैसे cope up करते हैं आप? Right. Situation तो I think players used to हो गए थोड़ा सा. I mean, COVID अब 1.5 years तक जारी है. Quarantine करा हुआ है, lockdowns करे हुए हैं. I think अब kind of normal हो गया है. Start में maybe a bit difficult था players के लिए क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे करा नहीं है. Okay, अब I think थोड़ा सा और normalized हो गया है, समझ में आ गया क्या होता है, किस वक्त करते हैं, और I think as human beings हम बहुत adaptable हैं, हम different situations को adapt करते हैं, और ये वही situation है. I mean, obviously around the world में COVID हो रहा है, तो हमें भी responsible होना पड़ता है जब tournaments हो रहे हैं for ourselves, for our families, जो हम वापस obviously अपनी countries में वापस जाते हैं, तो I think players अब used to हो गए in a way. I mean, it's still, हम prefer, obviously like anyone else, हम prefer करते हैं हम बाहर जाएं. Obviously Abu Dhabi बहुत beautiful city है. I'd rather go out. मुझे यहाँ racing track भी है, मुझे गाड़ी चलानी है race track पे, okay, हम नहीं करते ये. So obviously we'd like to be out, but I think हम professional हैं और professional environment में जब होते हैं, हम जो भी करना पड़ता है हम कर लेते हैं. Thank you. Imran Siddiq. जी इमरान, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है. जी इमरान. अच्छा, मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन हो चुके हैं. उस्मान, तैयारी कैसी है पीएसएल की? और 2 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो जीत चुकी है, और इसकी खासियत यह है कि ये कहीं से भी आके टूर्नामेंट में कमबैक करते हैं और किसी भी टीम को हराकर जो है वो फाइनल में पहुंच जाते हैं. कैसी तैयारी है? अब के थोड़ा सा तैयारियों में मुश्किलात भी हुई हैं, आपको कोविड के मसाइल हैं, फिर वो पीएसएल के भी मसाइल थे कि होगी या नहीं होगी, डबल माइंडेड थे सब. कैसी तैयारी, और क्या समझते हैं कि तीसरी मरतबा आप भी जो है वो ट्रॉफी उठाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ? Practice अच्छी जा रही है. हमने I think 3 sessions already कर लिए last 3 nights. So practice सब चीजें सही जा रही हैं. I think until you play the game, sort of game mode में नहीं आते, तो वो difficult चीज होती है. हमने a lot of the guys जो अभी खेला है काफी
weeks or a couple of months तक नहीं कोई cricket खेले है, तो I think जब first game होएगा थोड़ा सा हमारे लिए I guess अच्छा भी है कि हमारे पास one extra game है यहाँ खेलने के लिए, तो maybe one extra game में rhythm में आ जाए थोड़े से, बल्कि I think training तो सब चीज़ अच्छी हो रही है, preparation अच्छा हो रहा है. जब हम आए थे हाँ ज़्यादा पता नहीं था क्या हो रहा था, कौन से टाइम पे गेम स्टार्ट होएगा, स्केड्यूल क्या था, बल्कि अब सारा स्केड्यूल आ गया है और प्रैक्टिस हो रही है. आई थिंक एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल. थैंक यू उस्मान. प्लीज बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो माइक है वो म्यूट कर दें. थोड़ा बैकग्राउंड में जरा शोर हो रहा है, प्लीज माइक सब म्यूट कर दें. नेक्स्ट इज पॉल रैडले. Paul Radley, are you there? Not there. Not there. Bilal Akil. Bilal Akil, Bilal आपको आवाज आ रही है? जी ज़ुखरुफ भाई मुझे आवाज आ रही है. मेरा अस्सलाम वालेकुम उस्मान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के अब बकिया मैचेस हैं, आप इस जो पहले पाकिस्तान में आप नहीं खेले, अब आप यूएई की सरजमीन पर खेलने जा रहे हैं, तो विकेट कंडीशंस भी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, और दूसरा जो कोचिंग स्टाफ है उनकी तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले, क्योंकि लास्ट जो पीएसएल था उसमें इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमने उससे पहले एडिशंस में देखी. I don't think कि जो लास्ट परफॉर्मेंस हुआ था वरना उससे साल पहले हुआ था, I mean T20 बहुत फिकल होता है. कभी बार रोल में चले जाएं, बहुत अच्छा खेलें, और कभी बार नहीं खेलते, काफी हिट एंड मिस होता है. तो आई थिंक शदाब ने कहा था कि फर्स्ट दफा जब हम आए थे फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरिएशंस और वेरिएबल्स बहुत होते हैं क्रिकेट में, और ये एक और वेरिएबल है. हम ऑब्वियसली यहाँ खेलने आए न्यू ग्राउंड पे, सबके लिए वेदर भी वेरिएबल है, ड्यू आ जाता है रात में काफी. तो आई थिंक बहुत सारे वेरिएबल्स जब होते हैं फिर सोचते हैं पे हम क्या करते हैं, और हम जो अपने एक्सक्यूशन स्किल्स में एक्सक्यूशन वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जो कंट्रोलेबल्स होता है काफी क्लीशे होता है बल्कि ट्रू होता है. तो आई थिंक कोचेस यही कह रहे हैं कि मेक श्योर सब अडेप्टेबल हैं, जो कंडीशंस आएंगी जो भी होता है, बट ऑन एंड ऑफ द फील्ड, और फिर एक्सिक्यूट एज बेस्ट एज पॉसिबल. थैंक यू. सबा पाशा. सबा आपको आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट बाजिफ जब्बार. जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बाजिफ जब्बार from Cricket PK. Usman, you have been training since the last few days and you must have got the idea of the conditions now. So is there any personal milestone that you have to score a specific amount of runs or help Islamabad qualify? What's the ultimate goal of Usman Khwaja in PSL 6? No, Usman Khwaja's ultimate goal is always to win trophies. So individually, I don't really concentrate on that anymore. I just try to concentrate on what I can do for the team every specific game by game at that moment, whether it's on the field, whether it's batting. At the end of the day, you play the game to win trophies, and you try to contribute as best as you can. Some days, if it's a tough wicket and you're chasing 120, a 40 or 40 can be a really good score. A 40 or 50 can be a good score in that situation. But if you're chasing 200, then you need to be striking at 170. You need to be able to adapt to those conditions. That's the best thing for the team. That's the most important thing when you're playing these games. I think T20 is beautiful because it is I feel like it's the most team game there is in that respect, because you're always looking up in the scoreboard. You're always looking to see what's happening. And you're always worrying about, what do I need to do right now for my team to move forward? So the goal is always the trophies. Hopefully inshallah, we can get the third trophy for Islamabad United. But I think at the end of the day, when everything's over and done, that's what people remember the most. Thank you. Last two questions. Musad Afzal और उसके बाद Numan. जी Musad. Hey, Usman, welcome to the UAE.
My couple questions are about your acclimatization to the PSL and where it's being played. The first one is obviously about the fact that you guys are now going to be playing cricket in 45-degree weather. Real feel is hitting 50 degrees. We've spoken to the bowlers about how they're going to deal with it. I want to understand what you're doing differently from a batsman's perspective to play cricket in conditions like these, which frankly are unprecedented. And just to follow up on that acclimatization, which one of the local boys is, kind of inducting you into the team, who's making you feel at home, and maybe even close out that language barrier, which you seem to have a good grasp of already. Thanks. The first question, yeah, it's bloody hot out here. It's humid. It's the humidity which is the killer. I think I'm used to a bit of humidity being from Queensland back home. It's very tropical. It's very humid. But this humidity is as next level as I've ever had it. It's probably the one that comes close to remember being in Colombo and playing cricket there. I actually think T20 cricket is the only format of cricket where batting is it's possibly harder than bowling, because bowling's only 4 overs. And then you can field and then you don't bat. Where batting is, you could bat for 10 overs, and then in that 10 overs, you could be sprinting, 10 twos, a few threes in there, a few ones in there. And with gear on, with helmet on, I've always found that, if you score runs, obviously you get our first ball, but if you score runs, if you're there for at least 10 overs, T20 batsmen can be even harder. So yeah, it's going to be a challenge at times. Try to hydrate as best as you can, whatever you need to. I think the challenge will be the back-to-back games of playing sometimes. I think there's one period where every team is playing 2 games in a row. That's going to be the challenge. I think, teams will need to be smart, understand how the players are going, how they're feeling. It's hard enough to do that schedule when it's good conditions, but when it's conditions like this, it just adds that extra bit of element. But when the game happens, the adrenaline takes over. You're concentrating on the bat ball competition. You forget about the rest to some extent. It's only afterwards when you come home you feel the pain. So I think we're used to it as professionals. What was your second question again, please? I can't remember. I guess I've got along with all the guys. I try to get to know all of them. It's always hard trying to get into a new team and then remembering everyone's names, getting around. But the guys have been very accommodating to me. I think a lot of them were very taken back by the fact that I could understand and speak Urdu, whether it be broken Urdu or not. I could still communicate with them. So they were pretty excited by that, because I think a lot of them just expected and thought that I could only speak English, being in Australia my whole life. So it's been nice. They've all been very good. I've enjoyed, obviously, one of the guys I played against and before growing up, Saeed Ajmal. I mean, I think he's hilarious. I've actually been enjoying talking to him, chatting to him. He's he's got a great energy about him. He's not playing in the group, but I call him our local celebrity in the team. So I've really enjoyed his company. Noman. Assalamu alaikum, Usman. Hope you're doing good and enjoying your time with the PSL. Just wanted to ask you that there have been a lot of questions about the PSL bowling lineup and especially the competitiveness of the PSL bowling. So who is the one specific bowler? Because we have a lot of players from the big bash as well. We have Weatherald, we have Wildermuth, and we have different Tim David and other players from the BPL. So who is the one specific bowler that you have in mind that you're going to target, or you have you must have some difficulty facing him? We have Shaheen Shah Afridi from Pakistan, and the different competitive cricket we have in the PSL in terms of bowling. No one specific really, but as you mentioned, there's a few guys over it. Jack Wildermuth is one of my good friends from Queensland, so I like to target him at some stage if I'm playing against him. But the bowlers, as you said, they're all very good bowlers. But that's quite normal when you're playing at professional level. Everyone's a good bowler. I mean, it's quite normal. You play the Big Bash, you play anything, you play domestic cricket back home, international cricket. They're all good bowlers, but they're all human at the same time. And there's good batsmen out there too. So it's bat versus ball. The bowler can still bowl it wherever he wants, but the batsman's still got a bat in his hands, able to combat that. So that's the beauty of the game. That's why everyone loves the game of cricket. Because some days the batsman wins and some days the bowler wins. So for me, it's not about targeting anyone specifically. Obviously, when I'm batting and
playing game, I might fancy one bowler over another, and take a bigger risk against a certain bowler because I feel like the ball's coming out of his hands better. I can see it better out of his hands, whatever it may be. Or there's one short boundary of one side. There's lots of factors that come into it. So you can't really predict those sorts of things before the game actually starts. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉल का सवाल चैट में आया हुआ है कि अब उस्मान ने मुल्क जब छोड़ा तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो आईपीएल के लिए वापस गए तो उनको जो मुश्किलात थी, तो इस्लामाबाद के लिए आने से पहले उस्मान के दिल में कोई परेशानी वगैरह थी? पॉल का सवाल चैट में आया हुआ है। जी, पॉल को कहा था, वो मिस आउट हो गया, जो मिस आउट हो गया उनका क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आप सबके लिए जिनको मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट एक और प्रेशर आ रहा है कैप्टन का और कोच का, उसमें कोशिश करेंगे जो मिस आउट हो गए हैं उनसे क्वेश्चन ले लें। उस्मान, थैंक यू सो मच, और आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। थैंक यू गाइस।